हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ genai। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज एलएलएम, एलएलएम क्या होती है, उसका यूज केस क्या होता है। अपने लोकल डेस्कटॉप पे आप एलएलएम मॉडल कैसे सेटअप कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, और पाइथन के हेल्प से आप एलएलएम मॉडल के एक्सपोज एपीआई को कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एलएलएम, पहले समझते हैं एलएलएम क्या होती है। एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज को समझते हैं, एमएल इंजीनियरिंग को समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक मॉडल होती है। उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है इन इन सम डाटा। एक कुछ अमाउंट ऑफ डाटा में उसको ट्रेन किया जाता है, फिर उससे सवाल जवाब जो भी है उसके प्रेडिक्शन उसे जाने जाते हैं। तो एलएलएम भी एक तरह का मॉडल है। इट इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ए मॉडल, एक एक मॉडल है। लेकिन ये मॉडल हेवली ट्रेंड है, इतने सारे पैरामीटर्स पे ट्रेंड है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और एलएलएम का जो मॉडल है वो बेस्ड है नॉर्मल मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग पे नहीं, वो एक बेस्ड है डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग पे जो आप मॉडल मॉडल डेवलप करते हो, उसी डीप लर्निंग पे एलएलएम का मॉडल बेस्ड है, वही बेस है उसका। लेकिन जो ट्रेनिंग हुई है जो एलएलएम मॉडल की, वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स और लार्ज नंबर ऑफ डाटा में हुई है। इनफैक्ट एक काइंड ऑफ फुल इंटरनेट डाटा पे उसको या तो ट्रेन किया गया है, पार्ट ऑफ इट या स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ दैट। अब मार्केट में बहुत सारे एलएलएम मॉडल है, कुछ लाइसेंस्ड वर्जन है, कुछ ओपन सोर्स है। तो चैट जीपीटी जो अभी काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ डाटा में उसे ट्रेन किया गया है, इसीलिए उसके इन्फॉर्मेशन काफ़ी मीनिंगफुल निकलते हैं। चैट जीपीटी में जो भी आप पूछते हो प्रॉम्प्ट से, तो उसके इन्फॉर्मेशन काफ़ी मीनिंगफुल निकलते हैं। प्लस रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी में काफ़ी अच्छा है। और जितने भी एलएलएम मॉडल आप देखते हो, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डाले हो गया, या आप एलएलएम मॉडल ओलमा को देखते हो, ओलमा के भी मॉडल को देखते हो, तो ये सब जितने मॉडल होते हैं वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर में सेट होती है। आप अगर मॉडल के बारे में कुछ जानते हो प्रीवियसली इन मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, या उसको पैरामीटर बोल सकते हो आप। तो उस पैरामीटर, अब 10 पैरामीटर, 12 पैरामीटर, 20 पैरामीटर जनरली आप देखते हो नॉर्मली इस तरह के मॉडल में। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिलियंस ऑफ मॉडल। अभी इनके वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं कि कितने इस तरह के पैरामीटर होते हैं। देयर बिलियंस ऑफ पैरामीटर आर यूज्ड इन दिस एलएलएम मॉडल्स। एलएलएम मॉडल मेनली इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड मॉडल। आपके टेक्स्ट को समझता है विद द हेल्प ऑफ एनएलपी एंड अदर थिंग। उस टेक्स्ट को समझ के एक रिलेशन बनाता है, एंड अकॉर्डिंगली इट फाइंड्स द आंसर एंड गिव यू द रिलेवेंट आंसर, बिकॉज ये टेक्स्ट के बीच में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर लेता है। तो अभी समझते हैं कि एलएलएम को हम लोग अपने लोकल डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ओपन सोर्स एलएलएम टूल ओलामा। और ओलामा के हेल्प से हम लोग ओलामा के कुछ मॉडल्स उनके वेबसाइट पे, उस मॉडल्स को अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक कोई मॉडल बना हुआ है पहले से, उस मॉडल को अपने सिस्टम पे रन करेंगे। अब उस मॉडल को रिट्रीव करने के लिए, उस मॉडल को सेट करने के लिए वी नीड सम टूल। सो दैट इज वन ओपन सोर्स टूल विच वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, दैट इज ओलामा। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ ओलामा। सो olama.com, इसमें आप जाके यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड ओलामा। पहले तो ओलामा सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करोगे। उसको जब आप इंस्टॉल कर दोगे, विंडोज़ और मैक दोनों पे एक नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल होता है, तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। एंड देन इट विल बी रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑल्सो। यू कैन कॉल ओलामा सर्वर फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। सो दिस इज माई कमांड प्रॉम्प्ट विच आई वॉज यूजिंग टू गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। तो इसमें जाने के पहले पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से मॉडल है हमारे ओलामा में। तो व्हेन यू गो टू द ओलामा गिटहब, you will see here, when you scroll down, you will see large number of models, like you have gamma 3, you have deep seek model जो भी काफ़ी फेमस हुआ था, you have llama 3.2, llama 3.2, this is the latest one. And you can see the number of parameters in llama 3.3, which is the latest llama. इट हैव 70 बिलियंस पैरामीटर। तो आप समझ सकते हो कि ये मॉडल किस तरीके से ट्रेन किया गया है। इट हैज़ अराउंड 70 बिलियन, इट्स टू मच। मतलब कि मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि 70 बिलियंस एक मॉडल फिट कैसे हुआ है। एंड देन द साइज ऑफ दिस मॉडल, एक मॉडल इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, नॉट अ सिंपल। द मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टू क्रिएट दिस मॉडल। एंड द मोर कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हेन यू हैव टू ट्रेन दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ 70 बिलियन पैरामीटर. So it becomes a very complex model. You see around, we'll see here, it's like DeepSeek R1. So DeepSeek R1 has around 671 billion.
and the size is 440 GB. So अगर आपको कोई मॉडल को यूज करना है, you have to download that model. So for example, you are going to use llama 3.3. So you should have 43 GB of disk space, and for this I think minimum of 16 GB of RAM will be used. So I have a 16 GB of RAM machine, so I'll be using some model which is having 8 GB, which can run on the 8 GB of RAM. So if you go down, you have other thing also, like llama 3.1. It has 405 billion parameter. So you can't download the chat gpt model and run in the local, as chat gpt is available because it's a what you call license version, so you have to pay for it. But with the help of ollama, you can download the open source model. These are the open source model. So we'll be using, we have Mistral, which has having 7 billion parameter, and size is good, 4.1 GB. Another one which I had already downloaded is Llama 2. So Llama 2 is also of a small size, around 3.8 GB. So how you can download it? You have here, it's a command is there, ollama the tool name, and then run this particular model. For example, you are going to run llama 3.3. So then you have to write ollama run llama 3.3. So it will first check in the system. If the model is already downloaded, then it will start the command prompt of this model. Otherwise, it will first download it, do the setup, and then come up to the command prompt. So I'll show you here. So there are multiple ollama models are available. So what we'll do, so I'll go and just I'll try to get a small size one, for example. I'll just cancel it because I have the other one, like Fee for Mini. I'll run this one. Control C. Okay. So now it is pulling it. It is pulling this model Fee for Mini. So it will get downloaded. So you can see here it is getting downloaded, and when it's get downloaded, the things will be set up. So I'll try to do Control C into this. Okay. I don't want to download it. So for example, you have downloaded multiple models, so, okay, from the Ollama. Now, Ollama support these all models which you can see in the website. And then if you have downloaded 2 or 3 models, so how you will see that how many models you have in your system. So you have to run the command ollama list. So I have 2 models. So Minstrel is there, the latest version of Minstrel, and 4.1 GB, and Llama 2 is there. So I'll be using this two one, and I've just today itself I have downloaded this. So you can use this and to get the answer. For example, I want to run ollama 2. Okay, Control C. So I will run ollama run. Now I directly came inside this model because this is already been downloaded. So I can write what is Java. So it will give you the answer how we get into the LLM model. So Java is a high level. All this answer you can get it. Okay. So if I have to come out of it, so you have to press back. Similarly, you can go to the other model. So this is a command prompt thing. So if you want to delete a model, so you have an option. So if you want to have the full list of ollama command, just type ollama. You will get like rm. With the rm command you can remove the model. For example, you have from the R&D purpose you have used multiple model. In fact, with the help of ollama you can also modify this. For example, you want to modify ollama 2 in such a way that it first gives you like this is it give customized message, like this is Santosh data class, and in this channel you are going to learn about the data engine and the genai, or something of customized message. If you want to put it, you can put it. Other thing, a startup script can be done, like whenever someone use your user model or user chat, the following startup script should run, and then the question answer series should start up. So you can also customize it, which we'll see in the next session. I have not tried that customization. I'll try it, and then we'll look into it. But first, now we'll see like can we have the um, API of the Ollama, like Ollama model, which we are running inside the Ollama model. So for getting the expose API of Ollama, we are running multiple models inside the Ollama.
So for example, you have multiple models inside the Ollama. So if you want to see the open API and try to want to use in a Python program, so first you have to run the server. So we have to write the command ollama serve, and you will see here the list of APIs which it has. So somewhere you will see the port number, and on that port number, like for example here you can see this is my local host 127.0.0.1 and 114.3.4. So you can paste in the browser, you can see that Ollama is running, such kind of message you will get. Okay, and how to use this in the Python program. So you can pass the message in a JSON format. Like you can use curl, or you can use any of the tool where you can use the API. This API you can use it to send the message, post the message, and then you can get the reply. So I have a Python program here in which I'm just using the URL of this particular chat, my local host API chat. I mean, this is the URL or expose API from where I can interact with Ollama in the programmatical way. And then the payload, I'm using the model Mistral. Like I have two model which you have seen here. One is Minster and one is Llama 2. So I'm using Minstrel and I'm sending the message in which I'm asking what is Python. I can ask any message how we ask in chat GPT in the prompt. So what is Python? I'm asking it. The response I'm getting it, I'm posting the response request with this payload. I'm getting the response. I'm iterating on the top of the response to get it in a streaming way, because I want the stream to be true. I don't want the message to be stored in the response first and then get it displayed, because it will there will be a delay into that depending on what kind of information it gives, or what is Python for what is Python. तो what is Python के लिए हो सकता है कि काफ़ी लंबा टेक्स्ट वो दे दे, इसके कारण बहुत टाइम लग जाएगा रेस्पॉन्स वेरिएबल में उस चीज़ को कैप्चर करने में. सो द स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू हैज़ बीन यूज्ड, एंड देन वी आर just parsing it, and line by line we are displaying on the screen. So if you run this one, so it is going to hit this URL. Okay, so there is some error in the connection. Let me check it. So now again I have run it. I'm getting the result. Actually, I have disconnected. I have done the control C after running the Ollama serve. So that's that background process that should be running. Ollama server should be running. Then only the request can happen. So in my case, Ollama server is not running. So I got this connection issue. So I can write anything like when is next cricket World Cup, and then you can run this program. You can see this model is running. The next cricket cup in the men's schedule in the place in India in October 2023 to November 2023. So I think this model is something like not updated. So it's giving the backdated thing. Okay. So depend on what level the model updated, you will get the answer. You can see that if the model is not updated properly, you will not get the correct answer. So this way you can use this. The purpose of this video was to see how to do the setup of this. So we have done the setup, and then you can use it. In this way you can do more of an R&D. You can create a project, the use case. Because if you go and do the use case in the chat GPT, then you have to pay for it. So for a learning purpose, you can use this kind of way. So coming to the use case in the company, generally what kind of use case is coming? Like one of the use case which I have encountered is the client has the production support team. Now there are multiple, it's running since last 20 years, that production support work, but multiple things has been done manually, and then they write all the backdated issues, the resolution about the issues manually into some of the in the Confluent page or into their own repository. So they want to create something in which we write in a simple language and get out the answer out of that particular what do you call historical error finding, or the error issues which was encountered in the last 15-20 years. So the client want to create an LLM model on the top of their resource, being the repository, so that when you give the prompt like I'm getting an error in this parameter, and a particular kind of program has failed. So what are the different steps I should take to resolve this? So answer should be fetched from the repository. The second thing is to finding any issue into the CI/CD pipeline.
like you already have a CI/CD pipeline. If something gets failed, so finding the issue on that pipeline, in that also LLM model is being helped used in getting the customer. The third use case will be then getting the internal customer. For example, you are working on a bank for a bank, and bank internal customer want to know about some bank's policy just by typing into simple language. That can also be done. If you want to set up something for the leadership people who don't want to run the SQL for the particular ad hoc report, but they want to write the in simple English language, and that should be converted into some query language and get create an ad hoc report. In that use case also it can be used. LLM is getting very popular in the company itself, in the mid-sized company also using it, and multiple projects which I'm seeing the people are working on LLM. So this was all about the video. In the next video we'll go more deep into it and see what all frameworks can be built into that. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड गुड बाय. अगेन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल if you've not subscribed it, and please share my video to the other people who want to learn data engineering or who want to move their career path into data engineering field. Thank you, goodbye, and happy learning.